So, after gaining independence, Pakistan vigorously pursued bilateral relations with other Muslim countries and made a wholehearted bid for leadership of the Muslim world, or at least for leadership in achieving its unity. The Liaquat Ali Khan brothers had sought to project Pakistan as the neutral leaders of the Islamic world, in large part due to its large population and military strength. The top-ranking Muslim League leaders, Khaliquzzaman, declared that Pakistan would bring together all Muslim countries into Islamistan, a, a pan-Islamic entity. The USA, which did not approve of Pakistan's creation, was against this idea, and the British Prime Minister Clement Attlee voiced international opinion at the time by stating that he wished that India and Pakistan would reunite, feared to unity of Muslim world. तो यहाँ पर एक बात क्लियरली यहाँ पर मेंशन की गई है कि आज़ादी तो मुसलमानों को मिल गई, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को आज़ादी तो दे दी, लेकिन अब वो पछता रहे थे कि हमने ऐसा क्यों किया। अब रीयूनाइट हो जाना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान को जो कि इम्पॉसिबल था। द रीज़न इज़ दैट how it is possible that after so many martyred of Pakistan Muslims and as well as the Indian side, how it is possible to be reunited after the independence of Pakistan, which is almost not possible on that time, but with the brilliant effort of the forefathers of Pakistan, it becomes possible and we got independence. अब आज़ादी के बाद ये पॉसिबल ही नहीं था कि जब पाकिस्तान को दुनिया इस्लाम ने अपना एक लीडर तस्वर किया, दुनिया इस्लाम ने उसको खुशामदीद किया और यूनिटी बिटवीन द मुस्लिम वर्ल्ड एक उभर कर सामने आई और मुसलमानों के लिए एक बड़ी ताकत पाकिस्तान उभर के सामने आई और पाकिस्तान को आलम इस्लाम में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिली और पाकिस्तान आने वाले वक्त का एक हीरो था। तो कैसे पॉसिबल था कि मुस्लिम लीग टॉप लीडरशिप जो है वो स्टेप बैक करती और रीयूनाइट होती इंडिया के साथ, जो कि ऑलरेडी मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रोसिटीज़ कर रहे थे। इट वाज नॉट पॉसिबल टू स्टेप बैक। In a 1948 speech, Jinnah declared that Urdu alone would be the state language and the lingua franca of the Pakistani state, although at the same time he called for the Bengali language to be the official of the Bengal province. Nonetheless, tension began to grow in East Bengal. Jinnah's health further deteriorated and he died in 1948. Bengali leader Sir Khwaja Nizamuddin succeeded as the Governor General of Pakistan. तो 1948 स्पीच जो कायदे मोहम्मद अली जना ने की, उसमें उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि उर्दू ही हमारी कौमी ज़ुबान होगी। तो एंड बंगाली वाज डिक्लेयर्ड एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज। तो अब ये बहुत ज़्यादा उस वक्त तो उसको डाइजेस्ट कर लिया गया, लेकिन बाद में ये बात बहुत ज़्यादा बंगालियों को बुरी लगी और उन्हें एहसास कमतरी का वो शिकार होते गए और ये बात ही 1971 में एक वजह, बहुत वजूहत में से एक वजह ये भी बनी टू फॉल ऑफ ढाका, द रीज़न बिहाइंड द फॉल ऑफ ढाका। तो बहुत सी वजूहत में से ये एक वजह भी थी, क्योंकि बंगाल चाह रहे थे कि बंगाली लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज हो और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बात क्लियर कर दी थी कि उर्दू लैंग्वेज जो होगी वो प्राइमरी बेसिस पर कौमी लैंग्वेज होगी और वही कौमी लैंग्वेज डिक्लेयर की गई। इवन जो सर ख्वाजा निज़ामुद्दीन थे, वो जो कि जिनका ताल्लुक़ बंगाल से था, वो बंगाली लीडर थे, उन्होंने भी यही काम किया। उन्होंने जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बात कर दी थी उसी को कंटिन्यू किया और उसी मिशन को कंटिन्यू करते हुए उन्हीं के अक़वाल को अहमियत दी। हालांकि वो बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उन्होंने लॉयल्टी ज़ाहिर की कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। So after that, during a massive political rally in 1951, Prime Minister Liaquat Ali Khan was assassinated and Nizamuddin became the second Prime Minister. Tension in East Pakistan reached a climax in 1952 when the East Pakistani police opened fire on students protesting for the Bengali language to receive equal status with Urdu. The situation was controlled by Nizamuddin, who issued a waiver granting the Bengali language equal status, a right codified in the 1956 Constitution. In 1953, at the instigation of religious party anti-Ahmadiyya, riots erupted
which led to many Ahmadis' deaths. The riots were investigated by a two-member court of inquiry in 1954, which was criticized by the Jamaat Islami, one of the parties accused of inciting the riots. This event led to the first incident of martial law in the country and began the history of military intervention into the politics and civil affairs of the country. In 1954, the controversial one-unit program was imposed by the last Pakistan Muslim League PML Prime Minister Ali Bogra, dividing Pakistan on the German geopolitical model. The same year, the first legislative elections were held in Pakistan, which saw the communists gaining control of East and East Pakistan, with East Pakistan under the influence of Communist Party, allowing pro-American Republic Party gained a majority in West Pakistan, ousting the PML government after a vote of confidence in Parliament and the promulgation of the 1956 Constitution, which confirmed Pakistan as an Islamic republic. Two noble figures became Prime Minister and President. As the first Bengali leader of the country, Hussein Sohrawardy, became the Prime Minister leading a Communist Socialist Alliance, and I Sikandar Mirza became the first President of Pakistan. तो ये एक मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक मैंने पैरा पढ़ा, जिससे मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसे थोड़ा ब्रीफ करूँ. मैं कोशिश करूँगा कि आपका टाइम कम से कम लूँ. यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि यहाँ पर 2 से 3 इंसिडेंट हुए. एक तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ कि जिसमें 1951 में पॉलिटिकल रैली के अंदर प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान को असैसिनेट कर दिया गया. यहाँ पर पॉलिटिकल रैली का जिक्र है, बल्कि यहाँ पर एक और बात भी ज़रूर मैं आपको करता चलूँ कि कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान को जब असैसिनेट किया गया तो एक बहुत बड़ा मजमा था जिससे वो उस वक्त ख़िताब कर रहे थे, और उसको उस वक्त मंजर आम से गायब कर दिया गया. इसके पीछे रीज़न्स क्या थे, इसके पीछे क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स है, इसको हम डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि इसकी बहुत सी वजूहत थी. यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, एक रीज़न ये भी हो सकती है, प्रोबेबली इट इज़ पॉसिबल दैट इट वाज वन ऑफ द रीज़न द टेंशन इन द ईस्ट पाकिस्तान. वो टेंशन क्या थी? वो टेंशन ये थी कि जब ईस्ट पाकिस्तान में स्टूडेंट्स ने रैली निकाली, प्रोटेस्ट किया कि हम बंगाल को भी इक्वल स्टेटस देना चाहते हैं जैसे कि उर्दू को दिया गया, क्योंकि उस वक्त उर्दू वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान एज ए प्राइमरी बेसिस. तो वो चाह रहे थे कि बंगाली को भी वही स्टेटस हासिल हो जो कि उर्दू का हासिल है. तो उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिसमें पुलिस ने मैसिव लेवल पर उन पर फायर किए, ओपन फायर कर स्ट्रेट फायर कर दिए, जिसके नतीजे में बहुत से हलाकतें भी हुई, लोग ज़ख्मी भी हुए, स्टूडेंट ज़ख्मी भी हुए. और उसके अलावा एक और अहम पेशरफ्त हुई, वो ये कि 1956 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कोडिफाई किया गया और